Good evening, this is Viewpoint. I'm Zakir Jacob. The Allahabad High Court has asked some very significant questions. Is state funding of madrassas under a secular framework, under a secular constitution, is that right as per the Indian constitution? Will this not be a violation of Article 25 to 30? How can the state fund schools that are affiliated only to one particular religion and not others? How is it that other minority institutions are not state funded? And even if the argument is that a large proportion of Muslims are socially and educationally backward, which they are compared to other minorities, does that justify cultural and religious education? Should it not be made available for modern education, for modern schools? After all, you would want as many people from socially and economically disadvantaged sections to join modern schools and get modern education rather than be educated in religion or cultural matters. These are significant questions that the court has asked. We'll get to that in 1 second, but first the story. मगर संविधान जब पढ़ा जाता है तो ये विषय आता है और इस पे गंभीरता से विचार कर अपना मत सरकार को रखना चाहिए। हम लोग का भी ऐसा मानना है। All right, let's quickly run you through the questions that the Allahabad High Court has asked. Number one, the court is essentially asking, is it within the secular framework? Remember, state funding of religious institutions, whether they are madrassas or any other religious institutions, is state funding of those institutions within the secular character and the secular framework of the Indian Constitution. Is giving aid to madrassas in line with the Constitution? Remember, Articles 25 to 30 deal with religious issues, religious freedoms. Is it in line with Articles 25 to 30? Do madrassas give admissions to girl students? That's a very legitimate question to ask. Do other minority institutions, whether they're Christian or Sikh or Parsi, Jain, etc., do they also get aid, state aid as well? There is no mandatory playground, for example, in madrasas. Doesn't that go against basic child rights? So these are some of the very significant, pertinent questions that the Allahabad High Court has asked. Let me now open this debate up to our panelists. Joining us this evening, Shalabh Mani Tripathi is media advisor to the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Sheba Aslam Fehmi is Impar Steering Committee member. Maulana Masood Hassan Qasmi, Muslim scholar, and Shantanu Gupta, author and political analyst, joining us. Shalabh ji, मैं आपसे शुरू करूंगा. ये जो सवाल, काफी सवाल जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूछा है, क्या आप इससे सहमत हैं? बेसिक सवाल ये है कि एक राष्ट्र जो धर्मनिरपेक्ष है, उसके संविधान में लिखा है कि वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसकी सरकार को क्या ये जायज़ है कि एक समुदाय के लोगों को या एक समुदाय के स्कूल्स को पैसा देना, एड देना, क्या वो सही है? देखिए, पूरा विषय न्यायालय के भीतर है। न्यायालय के भीतर सरकार को अपनी बात रखनी है और निश्चित तौर पर सरकार अपने उसमें जवाब दाखिल करेगी। लेकिन ये जरूर है कि हम सबका ये मानना है कि शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता। ना तो शिक्षक का कोई धर्म होता है और ना शिक्षार्थी का कोई धर्म होता है। शिक्षा सभी के लिए बराबर होनी चाहिए और इसीलिए आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा हमेशा से रही कि अगर ठीक है, मदरसे में अगर आप धार्मिक शिक्षा दे भी रहे हैं तो एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। उसको पूरी तौर से उत्तर प्रदेश में चरितार्थ किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब आई उसके बाद से बहुत सारा आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। आपको जानकारी होगी कि 2017 के पहले बहुत सारे मदरसे उत्तर प्रदेश में थे जहां पर राष्ट्रगान के लिए भी अनुमति नहीं थी। राष्ट्रगान वहां पर नहीं बजने देते थे। वहां पर राष्ट्रीय ध्वज भी वहां पर उसको झंडारोहण नहीं होने दिया जाता था। वहां पर बच्चों को आधुनिक शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। साइंस, मैथमेटिक्स, ये तमाम चीजें उनको नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्थाएं लागू की। अब आप देखिएगा तो मदरसों के भीतर जितने भी राष्ट्रीय पर्व के कार्यक्रम होते हैं पूरे धूमधाम से होते हैं। एनसीईआरटी की पुस्तक जो हमारे सरकारी स्कूलों में, जो कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, वही मदरसों में उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी हैं तमाम सारी, उनमें भी इन बच्चों को शामिल किया गया। और निश्चित तौर पर हमारा ये मानना है
कि धर्म के आधार पर आप बच्चों के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, क्योंकि एक आंकड़ा है, इसको लेकर एक सर्वे है जिसमें यह बताया गया कि ज्यादातर मदरसों में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के होते हैं। उनका भी हक है कि उनको आधुनिक शिक्षा मिल सके, उनका भी हक है कि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों से वो मुकाबला कर सके, और उनका भी हक है कि देश और दुनिया में तमाम सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में बच्चे डटकर मुकाबला करें और उसमें सफलता हासिल करें। इस दिशा में तो इसी कारण मौलाना काज़मी, इनको मॉडर्न एजुकेशन देना चाहिए, इनको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस टाइप के जो विषय हैं उसमें पढ़ाई होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ दैट, व्हाई शुड द स्टेट फंड, सरकार को क्यों पैसे देनी चाहिए फॉर फंडिंग रिलीजियस एजुकेशन? दैट शुड बी अ प्राइवेट अफेयर, नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट। और ये जायज है, जैसे सलब जी बता रहे थे। yes, there are many statistics to indicate that children amongst the Muslim community are socially, educationally backward, and therefore all the more reason कि उनको ये जो modern subjects हैं उसी में पढ़ाई होनी चाहिए, ना कि religious या cultural affairs में। काज़मी साहब, देखिए, ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का मैटर है, कोर्ट के मामले में कोई इंटरफेयर नहीं करा, कोर्ट जो सबजुडिस मैटर है। लेकिन मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ जी। मदरसे में मॉडर्न एजुकेशन लाई जाए, हम लोग शुरू समझ चुके, मदरसा पास आउट हैं हम भी, तो तमाम सरकारों से ये हम बार बार दरख्वास्त करते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन लाया जाए, मगर सरकारें मॉडर्न एजुकेशन मदरसों में नहीं लाती। दूसरी बात, स्टेट फंडिंग फॉर रिलीजियस एक्टिविटीज का जहां तक ताल्लुक है, ये सिर्फ there must not be no double standard in using public fund for religious places and religious institutions. हम देखते हैं क्या डबल स्टैंडर्ड है? नहीं, क्या डबल स्टैंडर्ड है? आप बताइए। मैं बताना चाहता हूं ना, स्टेट क्या दूसरे कौन से माइनॉरिटीज के लिए फंडिंग करती है एजुकेशन के लिए? ऐसा कोई नहीं है जहां स्टेट फंडिंग होता है, या तो बुद्धिस्ट के लिए, या जैन के लिए, या क्रिश्चियन के लिए, या सिख के लिए। आप सुनिए नहीं, आप ही ने तो अभी कहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप पहले, हाँ, तो मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, रिलीजियस मैटर पर, इस रिलीजियस का चाहे कोई भी मैटर हो, उस पर स्टेट फंडिंग नहीं होना चाहिए, और रिलीजियस एजुकेशन भी उसमें इंक्लूड कर देनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी हमारे यहाँ कुंभ मेला होता है, महाकुंभ मेला होता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2014 में फॉर इंस्टेंस, सर, उसका और शिक्षा और पढ़ाई से क्या लेना देना है? मोर देन हम शिक्षा और पढ़ाई के विषय में हैं। एक्टिविटी है सर। नहीं, उसका और शिक्षा और पढ़ाई के विषय में क्या लेना देना है? कोई कनेक्शन ही नहीं है किसी भी तरह से। किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी पर, चाहे वो एजुकेशनल हो या किसी भी एक्टिविटी पर हो, शीबा असलम फहमी, नो, द कंपैरिजन, वो जो कंपैरिजन है जो काज़मी साहब कह रहे हैं, आई डोंट थिंक वो जायज है। शीबा असलम फहमी, द अदर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यायालय ने पूछा है, डू दीज मदरसाज अलाउ गर्ल स्टूडेंट्स? नाउ वी नो दैट देयर आर अबाउट 24,000-25,000 मदरसाज अक्रॉस द कंट्री which have state funding, largely in UP, Bihar, some other states in North India. Many of these madrasas do not allow education for girl children. Now, isn't that a relevant question for the court to ask? This is against gender rights. This is against women's rights. This is against the article for equality before the law. Don't you think this is a legitimate question? Thank you very much for having me here today. I was the coordinator of modernization of media Madrassa education program during the Atal Bihari government when Murli Manohar Joshi Sahab was the education minister. And while I was coordinating, I realized the resistance of all the Maulvis who were running these madrasas, particularly the aided ones, because they were fearing the accountability, the transparency, and the fund. The questions on the funding will be arising, and how are these funds being used? Whether it is government funds or these are community endowments. Yeah. So I have seen the resistance from the community that runs the madrasas. Prima facie, I comprehensively support and welcome the questions that have been asked by the Honorable High Court of Allahabad, that we have to answer, we have to standardize the syllabus, the nisab jise Urdu mein kehte hain, the syllabus, what is being taught, what is not being taught, etc.
as far as the gender question is concerned, I have written extensively on this, that these madrasas, whether they are run on the community endowment funds or government funds, they are only giving this, using this money for the male child. Yes. And because of this reason, Muslim women, Muslim girl child have been, the poor Muslim girl child have been kept away from the system. Not only that, also a kind of mediocrity and below mediocrity standards have been prevailing because there is no accountability. And I think you've hit the nail. I think you've hit the nail on the head. And Shantanu Gupta, I want to ask you that. I think the fundamental problem is काफी सारे मौलाना मौलवी लोग, and I'm not saying everybody, but काफी सारे ऐसे लोग हैं जो घबरा गए हैं, जो डर गए हैं कि if there is going to be government oversight, if there's going to be court oversight, उनके funding कहाँ से आएगी? सारा जो मामला है फंडिंग के चक्कर में हो रहा है, which is why there is a lot of charity money that comes, for example, in the form of zakat and other things that people believe in. No one has a clue where that money goes, and the moment you open yourself up to governmental oversight or court monitored oversight, then many of these Maulanas and Maulvis will be rendered jobless. Exactly, Zaga. I think, first of all, I'm very happy that High Court of Allahabad had started this debate. And I'm happy generally in the last 6-7 years, such debates which were almost a touch-me-not topics are being debated. Be it Hajj Yatra, which Narendra Modi has very nicely converted into, that money now goes to the education of girl children. Triple Talaq, the Waqf board, land acquisition, Yogi government has to put national anthem rule inside Madrassa. Now these topics are being debated, that how, you already said, that how right to education norms, be it pupil-teacher ratio, be it girls in schools, they are not followed in Madrassas. And finally, High Court have bailed the cat, and finally the debate will come. And because of this, just for the vote bank, Congress and other parties is doing it. And finally, this question has come into fore. RSS runs some in Vidya Bharati, Shishu Mandir, some 35,000 schools. They don't get a penny from government, and they are in all the states. So why madrasas? And if they are, as per Sachar Committee, if you follow, though I'm not a big believer of how Sachar Committee was constituted, but if you follow, you can give them scholarships to study in whichever schools, like other marginalized community people get. Yeah. But religious education on government money, complete no. So Qasmi Sahab, yehi to problem hai, and I'll come to Shalabh ji also in just 1 second. But Qasmi Sahab, yehi to problem hai. Nobody is saying that these kids don't require education. They need education. तो इनको इंजीनियर्स बनाना चाहिए या डॉक्टर्स बनवाना चाहिए या आईटी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाना चाहिए. यू हैव टू एजुकेट देम इन दैट डायरेक्शन. रिलीजियस एजुकेशन जो है वो अपनी टाइम पे करें, अपने पैसे पे करें. जी ज़का साहब, आप बात को सुन ही नहीं रहे. वो बात जिसका फंसाने में कोई जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है. हम तो खुद कह रहे हैं, आसाम में सरकार ने जो मदरसे थे, जो गवर्नमेंट फंडेड मदरसे थे, उनमें मुकम्मल तौर पर मॉडर्न एजुकेशन लाए और किसी मुस्लिम ने उसको अपोज नहीं किया. हम तो चाहते हैं जो सरकार है, जिसको गवर्नमेंट जिन मदरसों को फंड कर रहे हैं, वहां मॉडर्न एजुकेशन लाए, एंड वी आर वेलकमिंग इट. बट एजुकेशन मेरी बात आप समझे नहीं. मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर मॉडर्न एजुकेशन का ही सवाल है तो ये जो पैसे सरकार दे रही है, दैट सेम मनी शुड गो टू एडमिट दीज बॉयज एंड गर्ल्स इनटू मॉडर्न स्कूल्स. क्यों उनको मदरसे में ही मतलब फंसा के रखे हैं आप? सवाल ये है, गवर्नमेंट मस्ट कन्वर्ट दिस मदरसा इनटू स्कूल्स. हु हैज प्रिवेंटेड गवर्नमेंट, हु हैज स्टॉप गवर्नमेंट from converting these madrasas into modern schools? Madrasa which are funded by the government. वो मौलाना कासमी साहब का मानना ये है कि आप करिए, कौन रोक रहा है आपको? अगर आप फंडिंग कर रहे हैं तो आप कंडीशन इंपोज कीजिए. इसमें फिजिक्स पढ़ाई होनी चाहिए, केमिस्ट्री पढ़ाई होनी चाहिए, इतने लोग इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस के लिए बैठना चाहिए, ऐसे रखिए आप कंडीशन. चलो जी, मैं भेज रहा हूं, मैं ऑफर कर रहा हूं मदरसे, मैं अपने गांव में मदरसे ऑफर कर रहा हूं, आप आइए. देखिए, मैंने कहा ना कि सरकार ने इस दिशा में शुरुआत कर दी, और इसीलिए देखिए
उत्तर प्रदेश में आपको आजकल जो मदरसे नजर आएंगे वहां पर आपको अंग्रेजी की, वहां पर गणित की, वहां पर विज्ञान की, वहां तमाम सारी पढ़ाई आपको होती हुई नजर आएगी। हाँ, ये जरूर है कि आज ऑनरेबल कोर्ट ने यह विषय उठाया जो मुझे लगता है कि हम सबको लगता है कि बहुत साल पहले यह विषय उठना चाहिए था, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। और देखिए, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि कई बार क्या होता है कि मदरसों को लेकर जो धार्मिक शिक्षा होती है उसको लेकर रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोग आते हैं उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जब फर्जी मदरसों की जांच पड़ताल शुरू हुई तो करीब 50,000 से ज्यादा फर्जी मदरसे मिले जो केवल कागजों पर चल रहे थे। तो फर्जी मदरसे किसके साथ अन्याय कर रहे थे? क्या वो हिंदुओं के साथ अन्याय कर रहे थे? क्या वो किसी और कम्युनिटी के साथ अन्याय कर रहे थे? वो किसका हक मार रहे थे? उन्हीं गरीब मुस्लिम बच्चों का हक मार रहे थे जिनके नाम पर सरकारें पैसा देती रही 2017 से पहले। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जांच कराई, 50,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे निकले जो थे ही नहीं। तो एक तरह से केवल धार्मिक शिक्षा की आड़ में आप अपनी कम्युनिटी के साथ एक तरह का मजाक कर रहे हैं, क्योंकि इन बच्चों को आपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेने दिया, आपने इन बच्चों को साइंस नहीं पढ़ने दिया, आपने इन बच्चों को गणित नहीं पढ़ने दिया। और ज्यादातर जो लोग पैरवी करते हैं धार्मिक शिक्षा की या मदरसों की, उनके बच्चों के बारे में अगर आप पूछेंगे तो उनके बच्चे किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होंगे, उनके बच्चे दिल्ली या देहरादून के स्कूलों में पढ़ रहे होंगे। पर वो क्या चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे जो गरीब परिवारों से हैं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के, वो इन स्कूलों में पढ़ते रहे। और इसी कम्युनिटी ने, जो माइनॉरिटी के लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ही 50,000 फर्जी मदरसे खोलकर इस कम्युनिटी के साथ एक तरह का धोखा दिया। I want to go to another small part. I want to discuss about this as well. ये स्टोरी पे भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। नहीं, एक सेकेंड। This is again veteran actor Nasiruddin Shah. He has denounced some factions of Indian Muslims who are celebrating the Taliban's return to power in Afghanistan. And I'll ask this to our guests as well in just 1 second. The 71-year-old actor has said that those who are rejoicing at the revival of the Taliban should question themselves if they want to reform their religion or live with old barbarism. हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है, इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं और जैसा कि मिर्जा गालिब एक अरसा पहले फरमा गए हैं, मेरा रिश्ता अल्लाह मियां से बेहद बेतकल्लुफ है। मुझे सियासी मजहब की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानी इस्लाम हमेशा दुनिया भर के इस्लाम से मुख्तलिफ रहा है और खुदा वो वक्त न लाए कि वो इतना बदल जाए कि हम उसे पहचान भी न सकें। That last line, I think, was the most important. Indian Muslims should not change to the extent that you can't even recognize what Indian Islam stands for. Qasmi Saab, kya ye jaiz nahi hai? Why is it that there are some people in our country who are celebrating, जो जश्न मना रहे हैं, as Nasiruddin Shah said, जो जश्न मना रहे हैं कि तालिबान आ गया अफगानिस्तान में? भाई, आप जो लोग जश्न मना रहे हैं उनको आप बुक कीजिए, लेकिन हम तो मुस्लिम, ओवरऑल मुस्लिम तालिबान का अपोज करता है। हम तो तालिबान को इस्लामिक ही नहीं मानते। तालिबान अगर इस्लामिक होता तो चाइना की गोद में कैसे बैठा होता? नहीं, ये शफीकुर रहमान बर्क जो है, नहीं, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। शफीकुर रहमान बर्क, ये समाजवादी पार्टी के एमपी है। मौलाना सज्जद नोमानी, नहीं, आइसोलेटेड नहीं है। मौलाना सज्जद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो आपके हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उसके एक सदस्य है। वो भी कह रहे हैं कि तालिबान का वहां पे आना अच्छी बात है। साहब, ये कंफ्यूजन हो रहा है कि मुझे तो ये लग रहा है कि यूएनओ में हमारी गवर्नमेंट यूएनओ में चेयरमैनशिप में तालिबान को वहां जाकर के पता नहीं क्या हुआ। मैं तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो लोग बड़े इज इट आइसोलेटेड और इज इट फीलिंग एम्बोल्डन? सम पीपल आर फीलिंग एम्बोल्डन कि तालिबान वहां पे आ गया, यहाँ पे भी कुछ होगा। शांतनु गुप्ता, यूएनओ में हमारे यहाँ उसको क्यों रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और हम उसकी सदारत कर रहे हैं? शांतनु जी। Zaka, I think first of all, I'm quite happy what Nasiruddin Shah said, which is quite contrary to the kind of ideology he was spreading from the last couple of years. And he was rightly said, it's not coming from like fringe elements. All India Muslim Law Board, Mufti Muhammad,
Mehbooba Mufti, ex-Chief Minister, Samajwadi Party, Sambal MP, they all on camera, publicly, officially supported Taliban. I think the problem is communities do have problems. Hindu Samaj mein bhi problem thi, uski kuritiyan Hindu Samaj ne hi theek kari. But problem here is for ending triple talaq, and Narendra Modi has to come. To act against love jihad, Yogi Adityanath has to come. And that's the problem, that leaders within the Muslim community is not emerging to wipe up the problems within them. And welcome move by Naseeruddin Shah. शलभ जी, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का मानना है कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी सरकार जो हिंदू और हिंदुत्व में बिलीव करते हैं, आप कैसे उनसे बात कर सकते हैं? वो कहते हैं कि ये गलत है। देखिए, ये तो दुनिया देख रही है कि तालिबान बात कर रहा है या भारत बात कर रहा है। दुनिया देख रही है कि तालिबान की भाषा भारत के लिए क्यों है और क्या है, और ये नया भारत है कि लगातार तालिबान की तरफ से इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि नहीं साहब, हम भारत के साथ दोस्ताना संबंध रखना चाहते हैं, हम भारत के जितने प्रोजेक्ट हैं उनको सकुशल उनको चाहते हैं पूरा हो। भारतीयों की वापसी को लेकर भी आपने देखा होगा कि एक खबर जैसे ही आपके चैनलों पर आनी शुरू हुई कि भारतीयों को बंधक बनाने की खबर आई थी, तालिबान का क्या रुख रहा। तो ये नया भारत है, ये लोगों को समझते समझते समझ आएगा कि भारत क्या कर रहा है, भारत का स्टैंड क्या है। और मुझे लगता है कि ये विदेशी मामले हैं, कूटनीतिक मामले हैं, इसको लेकर अगर हम कोई टीवी पर डिबेट करें बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन भारत का रुख क्या है और तालिबान का भारत के प्रति किस तरह का रुख है, वो पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है तालिबान को लेकर। आप देखिए किस तरह के एक पूरा मंथन हो रहा है, पूरी दुनिया का जो विचार विमर्श चल रहा है वो भारत के इर्द गिर्द चला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि भारत के भीतर कुछ लोग बैठकर जब तालिबान का समर्थन करते हैं, चाहे वो अब आप कह सकते हैं कि वो किसी का आइसोलेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन कैसे कह सकते हैं? समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लाखों लोग उनको चुनकर भेजते हैं पार्लियामेंट में, और उनकी पार्टी ने अभी तक उसका खंडन नहीं किया। उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हाँ लगातार। और ओवैसी साहब क्या बोलेंगे? ओवैसी साहब का तो भाषण है कि मैं तो लगातार पार्लियामेंट में कहता आ रहा था कि तालिबान को कोई रोक नहीं पाएगा, तालिबान बढ़ता आएगा, उससे वार्ता करो, उससे बात करो। तो ये वो लोग हैं जो यहाँ कुछ बोलते हैं, बाहर कुछ बोलते हैं, इनके कई चेहरे हैं और इसलिए इनके चेहरों पर बहुत ज्यादा यकीन करने की, बहुत ज्यादा चर्चा करने की आवश्यकता। बहुत धन्यवाद शलभ मणि त्रिपाठी, गुप्ता। This piece of breaking news coming in. The Afghan Taliban has now said that they will announce most likely the government of the Islamic Emirate of Afghanistan tomorrow being a Friday. Remember, it's going to be exactly 3 weeks since Kabul fell. So the new Taliban government, over which there was a lot of back and forth with the various factions of the Taliban and the political office in Qatar, most likely the government will be formed on Friday. Anand is joining us with more details. Anand, do we have any contours of who all will be part of this setup? Well, we should get those details in some time, Zaka, but it looks like it's going to be similar to the Indian model or the model that they followed the last time around under Mullah Omar. But where it looks like Mullah Akhundzad is going to be declared the supreme leader. But who is going to be the prime minister or president and leader of the council, and what role is each person going to play? That's going to be interesting to watch, and we'll have to see if the announcement is made in Kabul or is it made in Kandahar. Because there are huge amounts of interplays going through, and the Taliban will also have to then also commit and see whether or not it's going to be an interim government, and will they say that eventually they will move towards even conducting elections and going to the people to get a clear mandate. Because the Taliban, although there have been support, but there are those like Hamid Karzai, Dr. Abdullah and Gulbuddin Hekmatyar and the others who believe that this has got to be an inclusive government that has representation of all factions and all people of Afghanistan. So we'll have to see. All of that is still a little bit up in the air, but it just seems to be that the tussle between the Eastern Taliban faction and the Southern Taliban faction seems to have been resolved, and there is a choice as to who is going to be the political head in Abdul Ghani Baradar, Mullah Yaqub and Anas Haqqani. Okay, we'll leave it at that. Thanks very much, Anand Narasimhan there with the details of the government of the Taliban likely to be formed on Friday. That's a wrap. I'll catch you again at 9 o'clock with Brass Tacks.